whether the rule of third was applied, whether it is PIP, whether what is the relation between the foreground, background, what kind of depth I am created, whether the depth is shallow or the deep depth of field. There are two kinds of depth of field. So here, if you see, the first image is deep depth of field, because you can see the water reflection, buildings at the background, and in the foreground, this anchor is lying in the foreground. So these are three layers, and everything is in focus. So it has a deep depth of field. But then there are images which has a very shallow depth of field. Like this green leaf, if you see, that these dew drops are in focus, and everything in the background or other parts are out of focus. So in this kind of composition, how focus help human mind to look at one certain point, and everything else is deliberately kept out of focus. So that is also part of composition, that what we want to show and what we want to hide. So and then it gives you idea about the movement also, the direction of movement, because as I said, that we have 2D compositions, so which has essentially left side of the frame and right side of the frame. So if there is any movement you are shooting, then you have to follow that left to right or right to left orientation, and that's where this composition also get affected because of the directional movement of your main character. So these all things we'll have to learn when we are going to learn about cinematography and composition. And then there is another rule called golden ratio, or rule of pi. So now I'll wrap up this PPT and stop sharing my screen, coming back to live here. And it's such a vast and interesting subject, cinematic composition, that I can interact and talk about these things for hours and hours, because it helps me to understand the subject personally even more. Every time I talk to students or pick up my camera or shoot some professional project, it gives me, excitement, to how I compose my shot, and how we add power to our image, how we add story to our image. Dada, can you make me the host? Chirag or Rupeshda, can you make me the host so that I can record? पहले का अच्छा था, मैं होस्ट था, फिर मैंने आपको होस्ट बनाया था, तो मैं रिकॉर्ड भी कर पा रहा। All right, let me see how to. Where do you find? Chirag, I'll do that once. Your presentation was so exciting. I want to see it more. मुझे बहुत लग रहा है कि ये तो जल्दी खत्म हो गया. Yes, yeah. Make host. Now like ये तो teaser से भी कम हो गया. I am the host. You recording in progress. I can go on and on this subject. So some of the points were like rule of 2/3. Yeah. And anyways, I will, please send me this presentation. I will send, and more than that, once the students will join our cinematography classes. Yes. I have to attend this session definitely. This is such a wonderful and enlightening. It is always, whenever I talk in my offline or online classes, also, that's what I was talking about. Then it is very fascinating. It is. This is how it's a magic basically. ये क्या बस फोन उठा के खड़े हो गए शूटिंग करने के लिए, मतलब क्या आप शूट कर रहे हो और किस तरह कर रहे हो, दोनों चीजें. एनीवे, स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग ले लेते हैं. अगर आप लोग, आशीष, शुभायन, इफ यू कैन शो योर फेस, एंड दीपांजन, तन्मय, अचिंत, you have any questions for sir, please go ahead, and then later if you want to know anything about the courses. Yes, Achint, any question, any doubts? Yes. Anything else? कुछ और भी पूछ सकते हैं आप, जनरल भी पूछ सकते हैं, फिल्म मेकिंग के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में. ठीक है.
फर्स्ट क्वेश्चन ये कि ऑल दीज रूल्स और ये जो नॉलेज है, जैसे आपने बोला कि डेप्थ क्रिएट करनी है, इन सबका क्रिएटिवली क्या सिग्निफिकेंस आता है? मतलब मैं कोई शॉट ऐसे एमेच्योर तरीके से भी ले सकती हूँ और एक प्रोफेशनल तरीके से भी ले सकती हूँ. व्हाट्स द डिफरेंस क्रिएटिवली? व्हाट इम्पैक्ट डज इट लीव ऑन द ऑडियंस? आई वांट टू नो उसका सिग्निफिकेंस क्या है. मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ कि ये शॉट कैसे लेना है और ये राइट टू लेफ्ट जाएगा. सो व्हाट इज द क्रिएटिव इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी शॉट इफ आई डिसाइड कि ऐसे ऐसे लेना है? If you can put some more light on that. It's a very interesting question. Thank you so much for asking. And it is very, very important to understand this aspect. So thank you for asking, and I'll try to answer your questions. So first and foremost, it takes me to evolution of cinema. So how, or art or painting for that matter. So how do we judge any work, any artistic work? So we judge that frame with the merit of lighting, with the merit of arrangement within the frame, and with the merit of the power of that image, which is we are looking at. It could be any painting, any photograph, or any frame from movie, any shot from movie. So what are the things which are under consideration? First of all, it should have a story, as I said. So you have to see whether you kind of composition you are doing, it is having a story. So that is very first thing to apply. Second is there are a grammar in filmmaking. So these grammars are set through a lot of research and R&D, that how a human mind works, how we analyze things, how we look at things, and how our brain accepts it. So over the years, a lot of creative minds have been working on these things, and then they have written books and their theories on composition and filmmaking. So that is generally worldwide accepted, that this rule of third, or that if the person is looking at the left of the side, then he is placed at the right, because then you are giving him the nose room or the looking room towards his look, because otherwise that person looks this side and there is no space this side. If you're looking at my video I'm showing you, then there is a blockage in front of my look, and there is a space behind me which is called negative space. So how these things have been derived? So it is all derived through how our mind perceives things. So that is the basic thing, that how human mind perceive things. Over the years they have observed this, and they have written the grammar of cinema and composition. So you have to understand, because as I said, that a layman can also look at any image without understanding or knowing these creative aspects, but then the impact of that image will not be there, because Dada, Hanji, can I add something, if you don't mind? Hanji, please do. Yeah. तो अचिन, तुमने स्पीलबर्ग का फिल्म देखा है? कोई भी स्टीवन स्पीलबर्ग का फिल्म, या राजकुमार भंसाली का फिल्म? भंसाली का फिल्म तो देखा है, और अनीस बज्मी का फिल्म देखा है? देखो, भूल भुलैया देखा है? Yes, I'm a big fan of भूल भुलैया. उस टाइप की फिल्में जो है अनीस बज्मी की, है ना, नो एंट्री थी पहले. और बंसाली अच्छा लगता है, संजय लीला बंसाली. यस. कौन सा अच्छा लगता है फिल्म? मुझे रजत कपूर, संजय लीला बंसाली, लाइक यू सेड, और बंसाली का कौन सा अच्छा लगता है? रजत कपूर वंडरफुल. कौन सा फिल्म अच्छा लगता है बंसाली का? बंसाली जी का देवदास वाज हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स. अच्छा, ठीक है. एक काम करना, भूल भुलैया को उठाना, ठीक है, फिर से देखना, और दूसरी तरफ देवदास को देखना. तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. क्यों मैं ऐसा. और दूसरी बात ये है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बंसाली का जो फ्रेम होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, पढ़ा लिखा, और उसके कैमरामैन भी पढ़े लिखे होते हैं. तो क्या होता है, उनका जो फ्रेम रहता है, उनका जो कॉम्पोजिशन रहता है, दे आर लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड.
they will never die down. But if you see a film like Bhool Bhulaiya, mostly, I don't know, I have not seen that, but earlier films of Anis Bazi, उसमें कॉम्पोजिशन का कुछ मतलब नहीं है, उसमें स्टार्स का मतलब है, स्टार्स, सिर्फ स्टार्स का फेस दिखना चाहिए और कॉम्पोजिशन जाए भाड़ में, है ना? तो अब आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह का फिल्म मेकर बनना है। आपको ऐसा फिल्में बनाना है जो कि हमेशा के लिए रह जाए, 5 साल बाद 10 साल बाद लोग देखें तो भी उसको कुछ अच्छा लगे, जैसे रूपेश ने बता रहे थे, अनकॉन्शियस इफेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। yes. या आपको ऐसा फिल्म बनाना है कि जब पॉपकॉर्न खाओ और भूल जाओ, है ना? मतलब यू हैव टू डिसाइड। सो आई होप वी आर एबल टू आंसर लिटिल बिट ऑफ योर क्वेश्चन। Yes, एक definitely. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा। अचिंत। आप किसी भी फ्रेम या फोटो को देखते हो या शॉट को देखते हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये आपको अच्छा लग रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ है? अटेंशन, लाइक मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है, इफ मेरा डाइवर्ट होता है अटेंशन फ्रॉम द सब्जेक्ट, या फिर ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता। सो इट शुड बी, कोई भी शॉट देखती तो ऐसी, इफ इट्स अपीलिंग टू मी, कुछ मेरा अटेंशन सब्जेक्ट पे जा रहा है या नहीं, और तो कलर्स। इन्हीं सब चीजों को बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर्स ने ऑब्जर्व किया है कि ऑडियंसेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या चीजें है किस तरह की अरेंजमेंट उनको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। देखो, एज मुकेश सर इज सेइंग, दो तरह की फिल्में होती है, एक पॉपुलर सिनेमा और एक पैरेलल सिनेमा। So why parallel cinema is always considered for film festivals, awards, and all that? Because there are learned technicians, learned filmmakers who apply the grammar of cinema, who apply the knowledge of whatever they have learned through film school learning or whatever, and that reflects in their work. But popular cinema में कई बार ये सब चीजें बिना जाने लोग करते हैं, और इसीलिए मुकेश को या हमें समझ में आता है कि इनको कॉम्पोजिशन का सेंस नहीं है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो सिनेमैटिक नहीं है, वो किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वो नो हेवायर है, थोड़े से ओपन एंडेड है ना? दादा, there can be good commercial cinema and bad commercial, हाँ, वो भी है, even if वो you भी एक don't consider सेगमेंट है। pirates. हाँ, वो भी एक सेगमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉपुलर सिनेमा में लोग अच्छे कॉम्पोजिशन नहीं करते, लाइक देवदास एज यू मेंशन, इट्स अ पॉपुलर सिनेमा as well as a very good example of very good lighting and very good composition. The cinematographer of that movie is Mr. Vinod Pradhan, if you must have heard about his name. He is one of the stalwarts of cinematography from our country, who's shot films like Mission Kashmir, Devdas, and a lot of other films. So, वो पॉपुलर सिनेमा में भी, एज मुकेश जी राइटली सेइंग, दैट उसमें भी गुड सिनेमा एंड बैड सिनेमा है, और आपको सेंस होना चाहिए कि इसमें वो जो ग्रामर है, जो एस्थेटिक्स जो हम बोलते हैं, वो अप्लाइड है या नहीं है। वो तो वही है जो आपके क्वेश्चन का जवाब है कि क्रिएटिवली वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जरूरी है या नहीं है, तो वो आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। So this is Got the it. final answer. Yes. Got it. Tanmay, you have any question? No, sir, not yet. Okay. Shubayan? Ashish, any question? Sir, I had one question, like how to maintain the visual consistency while we are shooting for multiple days. Like we are shooting under many different lighting conditions and different weather conditions, and the sunlight is also different. So how to maintain the consistency, visual consistency, like how to maintain that, the purpose of that? Oh, this is an advanced question and a very good question. So, Mukesh, you want to answer this question, or should I? No. Please carry on. I might add something. Okay. So the thing is, for that you'll have to learn cinematography, because your question is very much valid, that if you are shooting in different atmosphere, different lighting condition, different many days in a continuation shooting one single scene, so you have to achieve a kind of a harmony and similarity in terms of lighting and composition, making it look as if it is a
same scenario, different shots, but same within the same scene. So that's what most of the cinematographers challenge themselves. And there are so many segments. Like one thing I can share with you is the contrast ratio. So whenever we do lighting, we measure it in terms of contrast ratio. So if we know that our highlight and shadow contrast ratio is 1:2, then no matter what kind of lighting condition we are facing, or light is changing constantly, we try to achieve that contrast ratio throughout. And that will make your lighting look, same in terms of contrast between the shadow and highlight. And you have some gadgets or some tricks and techniques, how to achieve that contrast ratio or maintain that contrast ratio. So this is one thing. Second thing is the depth of field. How you maintain depth of field in different kind of shots, even if you are shooting in various days and various lighting conditions. So you have to maintain depth of field, you have to maintain contrast ratio, and you have to maintain composition. The style of composition. So these are three basic factors. If you maintain, no matter even if you are shooting one patchwork, one additional shot after 1 year of your main shooting schedule, it is going to look as a part of that scene and will fantastically match the whole scene, and it will not look like as if it is a patchwork or shot in a different lighting condition or a different atmosphere. So cinematographers learn how to achieve these things. And if you really want to understand, you will have to do intensive course of cinematography, where you will learn how to work in real location and shoot in various days one particular scene, maintaining their basic these aspects. So I can't tell you everything about that right now, because it's a vast thing, and you'll have to spend good enough time, to understand what are those factors which helps, to have cohesiveness in the scene, depending, even if we are shooting in different kind of atmosphere and different kind of lighting condition. I hope I am able to answer you. Yes, thank you, Dada. आपने काफी कुछ बताया, contrast ratio, depth of field, but as you rightly said, कि all these youngsters, it's very easy. It seems very easy these days to pick up the phone and shoot things and filmmaking, but आपको slowly realize होगा कि it's not that easy, and you need some kind of training and knowledge to do good work. और आज रे साहब का बर्थडे, उन्होंने पौथेर पंचाली. आशीष, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि 2 साल लगे पौथेर पंचाली, उनकी जो फर्स्ट फिल्म है, जो कल्ट क्लासिक है, बनने में. वो लोग गांव में जाके शूट करते थे, वो अपने पैसे से शुरू में बना रहे थे, बाद में पैसे खत्म हो गए, तो फिर गवर्नमेंट ने 1 साल लग गया, सबको बोल रहे थे भाई ये बनेगा नहीं है ना, बाय बाय, बट पैसे मिल गए. और फिर 1 साल बाद जाके उन्होंने सेम गांव में शूट किया, तो उनको सेम वेदर चाहिए था और सेम फ्लावर्स चाहिए थे. So they had to wait for those things as well. They were very patient. और उस समय Kurosawa and all used to wait for nature. और उस समय कोई ज्यादा फिल्म स्कूल भी नहीं होते थे, तो सत्यजीत रे और उनके डीओपी हमारे टीचर सुब्रतो सर, ये जॉन रिनवर एक फिल्म मेकर थे, वो लोग इंडिया आए थे, द रिवर बोल के एक फिल्म शूट कर रहे थे कोलकाता में, और ये दोनों यंगस्टर वहां जाकर के एज एन ऑब्जर्वर उनके काम को ऑब्जर्व कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, और वहां से उन्होंने काफी कुछ सीखा है. और उसके बाद सुब्रतो मित्रो, उसके पहले कभी सिनेमेटोग्राफी नहीं किया था उन्होंने, ही वाज अ स्टिल फोटोग्राफर, बट सत्यजीत रे एंड हिम, out of passion, they and after observing John Rainwar's work, they started shooting Pather Panchali. So any other questions? Shubhayan, if you have any question. So anyways, जो भी हैं, जो भी दिख रहे हैं, Ashish, Tanmay and Achint, these three are there. Dada, you want to say anything before I just tell them a little bit about the school and myself and just
Well, all I want to say and congratulate these youngsters who have joined this platform that essentially shows their inherent interest towards cinema and cinematography. And with my all experience working in the industry since last 20 years, I still feel like student, there is so much to learn. Every day we end up learning something new or the other. Even while teaching, I end up learning a lot of things. So, but nowadays, since this visual medium is so, open and, giving access to each and everyone, it is kind of being abused, I believe, sometimes out of fluke or out of just God's grace, you might have something very extraordinary, but that is not always possible. If you really want to have consistent work, as there was this question also, then you have to have a very sincere and serious approach towards learning cinema and cinematography or sound engineering or direction. These are the major departments of filmmaking. So we should go there as a seeking student, and without having any creative arrogance. We should learn and observe our seniors work as much as possible, and read and study their experiences, how they have done their shoot and their work. So that is very important. So that's what I want to encourage all you youngsters. If you are planning to make your career in cinema or as cinematographer. Over to you, Mukesh. Thank you. Thank you so much, Dada, for an enlightening session. I'll just briefly tell you about, I think Chirag sir must have sent you the website address and all, but I'll briefly tell you about Cinema Satsang School and myself. As I told you earlier, I have passed from studied direction from Satyajit Ray Film and Television Institute. Thereafter, I've been teaching since the last 2 decades. I was faculty at Whistling Woods International, Mr. Subhash Gai's Film School, then at Ramesh Sippy Academy, and I have set up and taught in many film schools all over India the last 20 years. तो मुझे पूरा पता है प्राइवेट स्कूल में क्या अच्छा होता है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या अच्छा होता है, और इसको ध्यान में रख के मैंने सिनेमा सत्संग ऑनलाइन फिल्म स्कूल शुरू किया है in the COVID time, and so we have all good faculty like Rupesh Da with us, supporting us. If you go to the website, you will see, and all of them are industry professionals, and we work in the industry, but we teach also. See, everybody who is a filmmaker cannot teach, and everybody who is a teacher cannot make films. ये जो combination होता है ना टीचर और फिल्म मेकर का, ये बहुत कम होता है. तो ऐसे लोग हमारे पास है सिनेमा सत्संग ऑनलाइन फिल्म स्कूल के पास, और हम लोग इतना 2 साल का 3 साल का करिकुलम 15-20 सेशन में आपको उसका जूस निकाल के देते हैं, जो कि आपको जिंदगी भर गाइड करेगा. एज रूपेश दा सेड, यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, बट यू नीड अ बेसिक गाइडेंस, यू नीड अ बेसिक पाथ कि किस रास्ते पे आप, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन है आज के वर्ल्ड में, आज के दुनिया में, लेकिन कहाँ पे क्या आपको है ना लेना है. और रुपेश दा ने बोला हाँ आपको गॉड्स ग्रेस, कभी एक इंट्यूशन आ गया अर्जुन कि अरे मुझे क्या जरूरत है ये सब सीखने का, मैं तो एक अच्छा फिल्म बना दी. वो एक बार होगा, लेकिन 10 बार नहीं हो पाएगा. अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़ा गाइडेंस और थोड़ा मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए हम भी हैं, और भी फिल्म स्कूल है. हमारी खासियत ये है कि ऑनलाइन है, आप दिल्ली में बैठे बैठे जहां भी है, उड़ीसा में, कलकत्ता में, आप सीख सकते हैं. ऑनलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये 1-on-1 अटेंशन मिलता है, ऐसा है. और करिकुलम आपके हिसाब से डिजाइन होगा. अचिन को क्या चाहिए, आशीष को क्या चाहिए, तन्मय को क्या चाहिए, ऐसा. अगर आप कोई बड़े स्कूल में जाते हो, मतलब जहाँ पे 30-40 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, वो लोग करिकुलम आपके हिसाब से मोल्ड नहीं करें. बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के हम करिकुलम बनाते हैं. अगर आपको रोहित शेट्टी जैसा फिल्म बनाना है तो हम वैसा सिखाते हैं. अगर आपको सत्यजीत रे जैसा बनाना है तो हम वैसा सिखाते हैं.
and all those at a very reasonable price. So if you all are interested, you can contact me or contact Chirag sir, and then we can take it forward. And this could be the first step. And ऐसा नहीं है कि after the course we forget you, like most film schools do. We will guide you throughout your life. You become part of the cinema satsang family. And if you are in Bombay, you can assist, you can see the shooting, Rupesh da, or if we have any shooting, any productions, we can call you and you can see the shoot. And if you're really good, we can even recommend you, for AD or assistant cameraman and things. So enough of marketing. That is one intention of me teaching, because I realized that a lot of assistants come and with half knowledge, So then I used to wonder that and people who come from film school, they very fast they become independent cinematographer. So most of the regular assistants are not so well trained. So then I thought probably it is time, to go and teach and train youngsters, and that's how I started teaching. Mukesh, so what you are saying is very valid. Hope you can get one assistant from here. I don't mind. That's what I do. You can get one camera assistant, and I can get one direction. So that's what I do. A lot of my assistants now are my ex-students, who work with me. And then there is a very good comfort and understanding and style and everything, So that really helps also. And that's my motive, to find out talent through teaching and, spreading knowledge. So if one of you are good, then why not? Probably you all can join our professional project and work along and have a hands-on experience, right? Thank you so much. And I think Shubayan is Shuru mein tha. I think he has some network issues or something. No worries. Anyway, yes, Tanmay, finally you have a question. You have a query. Sir, it's a very basic question, but no problem. No. I mean, I want to ask, sir, how to start? I mean, I want to become a cinematographer. I mean, I gave exam for FTI, and I studied the theoretical part a lot, but I haven't been able to make connection or known people who are working. So, sir, Rupesh, how to can I go answer? by? I mean, yes, how to go by? देखो बेटा क्या होता है ना, FTI is a premier institution in India. गवर्नमेंट के दो ही बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे 3 साल का कोर्स है. हम भी तुमको रेकमेंड करेंगे, अगर तुमको बहुत बड़ा कैमरामैन बनना है तो तुम वहां जाओ पढ़ने के लिए. लेकिन वहां जाने के लिए तुमको एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है. अगर तुम्हारा एकदम ही जीरो है तो वहां एडमिशन भी मुश्किल. That was not my question. I have read these. Little bit. How to start? पता how है. to start? पता है सर. हाँ सर, ये चीजें थोड़ी पता है. अब आगे सर कैसे काम करना, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ. यस सर. आप सुनिए, आपको पता है कितना पता है, मुझे पता नहीं है. ठीक है, मेरे आंसर के 2 पार्ट है. पहला तो वहां पे एडमिशन बहुत मुश्किल है. वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए. मैंने सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट जाने के पहले मैंने चित्रोबानी करके यहाँ कलकत्ता में इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने पढ़ाई की 1 साल. तब जाके मेरा एडमिशन हुआ. मेरा नंबर 2 रैंक आया सत्यजीत रे में उस साल इंडिया में. तो मुझे 1 साल पढ़ाई करना पड़ा वहां पे एंटर करने के. अब आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम आपको वहां के लिए तैयार भी कर सकते हैं. और दूसरी बात है स्टार्ट, जैसे कि आपको बताया, ये हम लोग जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं. आप यहाँ पे 15-20 सेशन का एक कोर्स करेंगे तो आपका एक बेसिक, आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आपको अब किसी से भी बात करेंगे, अगर रूपेश दा के पास वैकेंसी हुआ तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं बॉम्बे जाके. अगर आपको कॉन्फिडेंस इतना हम दिलाएंगे कि आप किसी को भी जाके पूछ सकते हैं कि सर मैंने सिनेमा सत्संग से कोर्स किया है, मेरे फैकल्टी ये थे, फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट, मुझे आपको असिस्ट करना है. तो ये लर्निंग, ये कॉन्फिडेंस, हम तो अब हमारा स्कूल खोल के बैठे, हम तो यही चाहेंगे. हम आपको मतलब इसलिए नहीं, आपको हम एक जेन्युइन गाइडेंस दें. हमारे पास एक एक्टिंग का लड़का आया था, अनुपम खेर ने, उसने कोर्स किया था 3 महीने का. उसके बाद हमारे यहाँ 5 क्लास किया. बोला सर 5 क्लास में जितना मैंने सीखा उतना मैंने 3 महीने में नहीं सीखा. So we are here with the things, good things. If you want, then it's not a very expensive course, in just 15 classes.
So you can try out. Rupesh sir, you want to add something? हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा सेकुलर लाइन बोलना चाहूंगा इसमें. I was just observing when you were saying, you have given a very right suggestion, but मैं एक analogy देना चाहता हूँ कि अगर आपको सपोज आईपीएल में क्रिकेट खेलना है या इंडियन टीम में क्रिकेट खेलना है, आप कैसे स्टार्ट करोगे? क्या है प्रोसीजर? आप सबसे पहले एक बेसिक पोटेंशियल एंड बेसिक टैलेंट होता है, वो उसको खुद को रियलाइज करना पड़ता है या आपके कोई मेंटर आपको उसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है. उसके बाद जो एंट्री लेवल की कॉम्पिटिशन्स होती है, रणजी बोलो या जो भी है, स्टेट, यूनिवर्सिटी, वटेवर, वहां पे आपको थोड़ी इजीली एंट्री मिलती है. वहां पे आप अपने आप को प्रूव करते हो, फिर वो एक लेवल बढ़ता है ऊपर, फिर आप और भी बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो, फिर वहां पे परफॉर्म करना पड़ता है. फिर उसके बाद फाइनली यू मेक योर नेम एंड देन प्रॉब्ली यू प्ले फॉर योर कंट्री, right? This is how the process goes. The same thing goes even in cinema also. First you have to understand and feel from within कि आपके अंदर वो potential है, वो passion है और वो talent है, और अगर वो है तो उसको nurture करने की जरूरत है, उसको train करने की जरूरत है, उसको skill में convert करने की जरूरत है. और वहीं पे आता है platform like सिनेमा सत्संग और FTI और SRFTI और whoever. But SRFTI और FTI में directly entry possible नहीं है. They are national institute. If you are very extraordinary, probably you can break in. Otherwise, आपको उसके नीचे के लेवल के कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज आपको अक्वायर करना चाहिए. उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनानी चाहिए, स्प्रेड करो, रिव्यू करो, देखो, फिल्म फेस्टिवल में भेजो, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, एंड दैट्स हाउ डोर्स विल ओपन. And if you come up with some of your very good work to me or to any leading cinematographer in Mumbai film industry or Kolkata, wherever, they will take notice of that, and then they will give you little chance. Then you'll have to spend some more time assisting or associating. Then the time will come when you'll start doing your independent director of photography work. So it takes time, it takes perseverance, it takes a lot of effort and patience. Right now I am working in Mumbai, but it's a 20 years of journey. Even if I am from Satyajit Film School or a student of Mr. Subrato Mitra, it is not a cakewalk, because the kind of projects are being offered or the kind of projects I want to do, it is not always going to come to me like a blessing always. So you have to have a great patience. You have to keep on working on yourself and maintain that fire for a long time, because we get disheartened also very fast nowadays. We are living in a time where we are becoming very impatient. We think हम 4 YouTube के वीडियो देख के cinematographer बन जाएंगे और फिर we'll replace everybody else and we'll start earning a very good money, and all awards will come to my Dada, I just want to thank you so much for your guidance. Just want to wrap up. Just 1.5 minutes is left. Okay. Thank you, Chirag sir. Thank you, Rupesh sir. And you use a very nice word, mentor. That's what mentor. We can be good mentors at Cinema Satsang Film School. Mentor बहुत जरूरी है. कोई भी पढ़ा देगा, पैसा ले लेगा. हम लोग वैसा पैसे के लिए ये काम नहीं करते. हम लोग एक genuine we handhold the students up to a certain point, and of course finally you have to make a mark. Currently मेरे 300 students Bollywood में काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े directors हैं और actors हैं. So that is what I wanted to say. The concept of mentor. Correct. Yeah. So that's what even I was trying to say. So please keep on working, keep on exploring yourself and keep on exploring market. There are two aspects. One is aesthetical aspect, which makes you good or bad cinematographer. Second thing is what kind of businessman you are, what kind of approach you have towards the market, So that is also one thing. Sometimes bad cinematographers also can get more work, and a good cinematographer can sit at home, depending on what kind of marketing person he or she for him or herself. Because that is also one factor. Quickly, if I can add on to this, So all the best to all of you. Congratulations and thank you so much. And you can reach out to Mukesh sir and me anytime if you need any guidance or any support. Chirag sir, last word to you. Chirag, you want to say anything? Yeah.
Thank you everybody for joining in